everyone, welcome to my channel Educational Concept. ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆମର OSSTET ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ जोटा कि आपण जो माने PCM होंतु बा CVZ होंतु जोटा हमर टॉपिक रहउची सिलेबस अनुसार हाइड्रोकार्बन व्हिच इज वेरी इंपोर्टेंट एंड आपण यदि प्रिपरेशन करूचंती OSSTET ताले आपण को प्रथमे जानि रखिबा दरकार कि आपण NCERT बुक्स फॉलो करंतु जोटा कि बहुत हेल्पफुल हुए आपण जदि चाहिबे आपण सही हिसाब रे आपण जदि भलो भाबरे प्रिपरेशन करूचंती देन यू कैन सक्सीड बिकॉज मो भी एटारू फॉलो करिकि मु भलो भाबरे एटारू मते सफलता मिलेछि जोटा कि आपण मानको आज ए वीडियो रे देखैयाकू जाउछि व्हाट इज हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोकार्बन्स आर composed of carbon and hydrogen. You know about it? The important fuel like petrol, kerosene, coal, gas, CNG, LPG, etc. are all hydrocarbons or they are mixed. What is the sources of petroleum and natural gas are the major sources of aliphatic hydrocarbon, which coal is an important source of aromatic hydrocarbons. What is aromatic hydrocarbons? You know about it. The oil if you are not जदि आपण ए विषय किसी जानि ना हंती देन आपण मते aromatic what is aromatic hydrocarbon you can ask me then मु कहया को चाहू छी आपण को भलो भाबरे आपण NCERT बुक्स फॉलो करंतु which is very important and very beneficiary for us. The oil trapped inside the rocks is known as petroleum. Petra that means rock, oleum means oil. The oil and the petroleum field is covered with a gaseous mixture known as a natural gas. The main constituents of the natural gas are the methane, ethane, propane and butane. This is very important. You can एटर आपण देखिबे एई वर्षर आपण जहा भी आसीथिला आपण भलो भाबरे देखंतु हाइड्रोकार्बन्स रो बहुत क्वेश्चन एई भितरु आसी जिवो आपण को देन क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आमे हाइड्रोकार्बन्स हाउ मेनी टाइप्स गोटे होची एसाइक्लिक एंड अलिफाटिक जोटे कि ओपन चेन सिस्टम रे दय थाए देन कार्बोसाइक्लिक एंड साइक्लिक और साइक्लिक तो एटा को आमे डिफरेंट टाइप्स रो डिवाइड करूचे गोटे होची अल्केन्स alkenes and alkyne जोटा कि हमर आसीबो एटा एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक जोटे कि एलिसाइक्लिक ता हमें डिफरेंट टाइप्स रे गोटे होची साइक्लो अल्केन्स साइक्लो अल्केन्स एंड साइक्लो अल्काइन्स तो आपण एई विषय रे आपण भलो भाबरे अलर्ट हेबा दरकार व्हाट इज अल्केन्स आपण देखि पाउथिबे एई स्ट्रक्चर रु आपण कर कार्बन एंड हाइड्रोजन रो बॉन्डिंग आपण भलो भाबरे देखि पाउथिबे जोटा कि होची पैराफिन्स जनरल फॉर्मूला CnH2n + 2 एंड तार हाइब्रिडाइजेशन होची sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपण भलो ऑपरेटर देखि पारुथिबे एंड CC बॉन्ड जोटे कि हमरो कार्बन कार्बन बॉन्ड रे लेंथ होची 1.154 एंगस्ट्रॉम्स केमिकली ऑन रिएक्टिव so chain position and optical isomerism. Heftane has 9 isomer and octane has 18 decane 75. Very important. देखो अपना CH4 methane you can find out here and there is देखो अपना अगर एठी एंगल गुडा भी देखि देछि जोडे कि बॉन्डिंग ता अपना भला भाबरे देखि पारुथिबे 109.5 डिग्री तो आपण को भला भाबरे ए विषय प्रिपरेशन करबा को पड़िबो देन एटा परे आपण को मो देखौछि आपण को प्रिपरेशन Wool's reaction 2CH2Br plus 2Na dry ether रे हमर CH2CH2CH plus 2NaBr follow mainly free radical mechanism useful in preparing an alkane containing even number of carbon atoms stepping of reaction Franklin reaction जोटा हमर थाए very important which is very important for your exam Rx plus Zn plus Rx RR bond हैला ZnX from Grignard's reagent which is very important also RMGX which is very beneficiary for your exam RMAX plus HOH RH जोटा कि देखो RH and रहीगला remaining MaOHX जोटा आपण देखि पारुथिबे reaction from unsaturated hydrocarbons Savitier Sendrens reduction जोटा RCH CH2 plus S2 जोटा
आमर आसला हीट हे परिबो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक आमर रिएक्शन जोटा हीट फॉर्मेशन हुए RS2 RCS2 CH3 RCS3 triple bond CH plus S2 Ni RCS2 CH3 for carboxylic acid CH3 COO minus Na plus NaOH जोटा कि कार्बन ऑक्साइड CH4 plus Na2CO3 सोडियम इथानोएट Kolbe's electrolytic method 2CH3 COO minus Na plus 2H2O जोटा कि आमर एटा कौन कहते ना सोडियम एसिटेट प्लस इलेक्ट्रोलिसिस हला परे CH3 bond CH3 plus 2CO2 plus S2 plus 2 NaOH. Physical, what is the physical properties? Physical properties nature. Non-polar due to covalent nature of CC bond and CH bond and CC bond energy 83 kilojoule per mole and CH bond energy 99 kilojoule per mole. C1 CF4 equals to gases, C5 C4 17 colorless odorless liquid and CS less than 6 C17 solid. Solubility like dissolve like these polar compounds dissolve in polar solvent and non-polar compound dissolve in non-polar solvent. And boiling point, which is important, low boiling point due to non-polar in nature. Molecules are held together only by the weak van der Waals forces. Which is the van der Waals forces? आपको क्वेश्चन आसथिबो जे व्हाट इज द van der Waals forces? Van der Waals process is a general term used to the attraction of intermolecular forces between the molecules. जोटे कि हमर आसुची ताको कोन कहते ना van der Waals forces. जोटे कि हमें टू काइंड्स रो करूचे गोटे होची weak London dispersion forces and another one stronger dipole forces. तो आमे एटा देखिबा since we know the magnitude of the van der Waals forces is directly known directly proportional to the molecular size. Therefore, the boiling point increases with the increase the molecular size with increase in the number of carbon atoms. तो आपण एठी देखिले जे boiling point increase होतिबो जोटा कि molecular size increase हो, that is known as the carbon atoms रे हमरो increase in numbers. Noted the boiling points of the branched chain alkanes are less than the straight chain isomers. This is due to the fact branching of the chain makes the molecule more compact and thereby decreases the surface area, which is wrong here. Surface area and consequently the magnitude of the van der Waals forces also decrease. Then CH3, CH2, CH2, CH3, CH3 जोटा कि n pendant boiling point 309 के एटा आपण देखि परिबे तर बॉन्डिंग ता देखैछि. तो देन आसला केमिकल प्रॉपर्टीज. व्हाट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज? कंबक्शन जोटा हमर कम्बशन जोटा होची हमर आपण जानि थिबे तर CH4 plus 2O2 CO2 plus 2H2O. Oxidation होला, oxidize होला, you know what is oxidation and reduction. Addition of कौन oxygen जोटा कि हमर oxidation जोटा हमें को CH4 plus O2 जोटा कि हमर आसीगला CH3OH. हमर आसीला reagent आसीला copper 573 किलो केर हमर जोटा आसीला CH4 plus O2 MO2 O3 हमर reagent CH3O जोटा कि हमें ताकू हमें कौन नेमिंग देले ना मिथानल plus H2O. Then substitution. Halogenation CH4 plus Cl2 UV CH3Cl plus HCl. CH3 UV CH2 Cl2 UV Cl3 देखो आपण देखंतु हाइड्रोजन ता हमर कोन हे होची ना लेस हे का होची CH3 एस होची देन आपण CH2 आस होची बुझि परचंदी. तो iodination is a reversible reaction. आपण reversible reaction विषय जानि थिबे which reverse. So it is carried out by heating alkane in the presence of oxidizing agent like iodic acid HiO3 and nitric acid, you know about it, HNO3 or mercuric oxide SgO, which oxidizes Hi formed during the reaction. CH4 plus I2 जोटा heat हमर थाए CH3I plus Hi 5Hi plus HiO3 plus 3H2O जोटा हमर 3I2 आसीगला. तो नोटेड एटी कोन हैला ना fluorination of alkane takes place explosively resulting even in the rupture of CC bond in higher alkanes.
Then asigala features of halogenation. The reactivity of halogens. This is very important for your exam because it a previous year question be asuchi eta prayato sabu question asuchi OSSTT exam pai eta very beneficial. The Fe2 greater than Cl2 greater than Br2 and Br2 greater than I2, which is very important apanko exam pai. तो एटा बहुत notable करूँ. The rate of replacement of hydrogens of alkane is 3 degree, तापर लेस आसे 2 degree and 1 degree. जोटा आपण आसीगला n butane टा formation कला. तो तार structure देखंतु. Structure is very important, which is माने exam ପାଇଁ ବହୁତ important ଆପଣ ତାର ଦେଖନ୍ତୁ. Then ଆସିଲା mechanism. Halogenation reaction takes place by free radical mechanism. The reaction proceeds in the following steps. Initiation, chain initial step होची Cl bond भितरे to a Cl. Then chain propagation step देखंतु, chain termination step देखंतु. Then ଆସିला nitration. What is nitration? एटा exam रे भी आସୁची very important जोडा. The reaction takes place by free radicals mechanism at high temperature 450 degrees Celsius. At high temperature CC bond is also broken so that the mixture of nitro alkanes is obtained. जोटे कि आपण स्ट्रक्चर रे CH3 CH2 CH3 जोटा 450 डिग्री सेल्सियस रे कंसंट्रेशन HNO3 रे हमर आसी गला तार स्ट्रक्चर आपण देखि परुथिबे. एटा आपण को बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटे कि आपण एटा निहाती मन रखिबा दरकार. Then reaction occurs as HONO2 जोटा हमर homolytic fission आसिला fusion know about it जदि आपण जानि नांती कमेंट बॉक्स रे लिखि दियंतु. Then आपण को अपकमिंग वीडियो रे आपण को बेनिफिशियरी हेई पडिबो आपण को पई. त आपण को एटा म निहाती आपण को रिक्वेस्ट करछि कि आपण सेटा देई परिबे. Then RH plus OH R HOH R NO2 R NO2 एटा जानछंदी sulfonation, which is very important. Nitration sulfonation is the very important question for your exam. So what is sulfonation? Replacement of hydrogen atom of the alkanes by SO3H group, which is very important for your exam. CH3 जोटा हमर बॉन्ड आछि ना isobutane एटा भी आपण मन रखिया दरकार. प्रोपेन alkene alkyne आपण फार्मूला दे देछि सही हिसाब रे आपण निजे देखि पारुथिबे. एटा आइसोब्यूटेन आसिला ओलियम रे हीट रे आपण को आसिला कोन ना टेट ब्यूटाइल सल्फोनिक एसिड. द रिएक्शन occurs 450 डिग्री सेल्सियस होमोलिटिक फिजन जोटा HOSO3 जोटा हमर आसी गला कोन एटाला ना हमर जोटा हमर सल्फोनेशन reaction occurs ହେଲା. RH plus OH R HOH जोटा आपण देखि पारुथिबे. Then aromatization, which is very important for your exam. This is the method is called the dehydrogenation or hydroformation forming जोटा hydroforming and dehydrogenation जोटा कहंती. Similarly, heptane gives the toluene, N-octane gives the O-xylene and 2-methyl heptane gives M-xylene. Thermal decomposition or pyrolysis or cracking or fragmentation. When higher alkanes are heated in high temperature about 700 and 800 K in the presence of alumina or silica catalyst. Our catalyst kon asila which is very important, alumina or silica. The alkanes break down to the lower alkanes and alkenes, which is very important question. Action of steam catalyst nickel alumina जोटा हमर आसिला Al2O3. एडा आपण this reaction is used the industrial preparation of the hydrogen from natural gases. Then आसीगला हमर isomerization. What is the process of isomerization, which is very important for your exam? Then आबे next देखिबा isomerization. What is isomerization? Then CH3 CH2 4 CH3 जो तापर आसीगला हमर एनेक्शन जोटा हमर आसीबो तार फॉर्मेशन करिबो कोन ना 2 मिथाइल पेंटेन एंड मिथाइल पेंटेन. तापर कन्फर्मेशनल isomerism जोटा कहंती हमरो. The different molecular arrangement arising as a result of rotation around carbon single bond is called the conformational isomers or rotational isomers, and the phenomenon is called as the conformational isomerism, which is very important. Numerous possible arrangements of ethane are possible to extreme conformations are known. These are the eclipsed conformation and
staggered conformation which देखो 1 हमर हाइड्रोजन बॉन्ड रे जोटा फॉर्मेशन करचंदी जोटा staggered and eclipsed तो एटा which is very important question. Then आसिला Newman projection see your Newman projection here the bond between the hydrogen and hydrogen staggered and skew and eclipsed जोटा हम skewed हेची देखंतु एटा आसिला हमर normal staggered then skewed हेची देखंतु dotted line देखि पड़थिबे then eclipsed हे जेची तो एटा हमर आसी गला तो कोन ना तार हमें पढ़ी देले न्यूमैन प्रोजेक्शन मेथड